हेलो एवरीवन। आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। तो आज आभास पॉडकास्ट एक बार फिर से लेकर आया है एक नए मेहमान को। वो जो कि बहुत अलग तरह का काम कर रही हैं। वो अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटीज में उन्होंने पीएचडी किया है। वो भी इंडिया से नहीं, टेक्सास अमेरिका से। डॉक्टर श्री पद्मनी चेना प्रगदा। वैसे वो हैदराबाद की रहने वाली हैं, लेकिन वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई और वहां पर उन्होंने अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसमें रिसर्च, उसमें काम करना शुरू किया। जो कि बहुत ही अलग तरह का काम है। वो चाहती हैं कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें इक्वल एक्सेस हो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का। ये अब हमने सबने इस बार देख लिया कि इस बार के पैरा ओलंपिक्स में इंडिया इतने सारे मेडल्स लाया है। तो जब तक एक्सेसिबल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज नहीं होंगी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ये मौका नहीं मिल पाएगा। तो पद्मिनी जो है वो इसी एरिया में काम करती हैं। पद्मिनी फाउंडर डायरेक्टर हैं अडेप्टेड स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन की। और ये ज्यादा करके लोगों को एनकरेज करती हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आने के लिए और अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में आने के लिए। वैसे ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो एक तरह से ये एडवोकेसी करती हैं, रिसर्च करती हैं और बहुत फायर ब्रांड एडवोकेसी करती हैं, मैं कहूंगी। तो मिलते हैं पद्मिनी से। नमस्कार, आभास पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर पद्मिनी से। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, डॉक्टर पद्मिनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया है, अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो कि बहुत ही रेयर, मैंने कभी नहीं सुना ये इस टॉपिक पे रिसर्च। मैं बहुत फैसिनेटेड थी इनसे बात करने के लिए कि इनकी रिसर्च में क्या है, क्या रिसर्च किया और इन्होंने क्यों इस टॉपिक पे रिसर्च किया। हेलो पद्मिनी, वेलकम टू द शो। Hi, Abba. How are you? ऑल गुड, ऑल गुड। Great. मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि एपीए, अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटीज, इज योर रिसर्च टॉपिक। सो व्हाई डिड यू डू दैट? आपने क्यों किया? I started my career as a physiotherapist India में हैदराबाद से पली बड़ी हूँ. So I'm from Hyderabad and बीपीटी पढ़ा है मैंने 5 साल. क्लिनिकल कोर्स है. तो मेरा आई थिंक आई वाज रेज्ड इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे सोशल जस्टिस का बहुत डिस्कशन होता था मम्मी डैडी के बीच में. देयर यूज्ड टू बी इफ देयर वर एनी इश्यूज फॉर डैड एट वर्क ही वुड टॉक अबाउट दोज एट द डाइनिंग टेबल एंड मम्मी ऑल्सो यूज्ड टू ऐड टू इट. तो वो माहौल में हमारा जस्टिस के अराउंड बहुत सा डायलॉग होता था. तो आई थिंक ग्रोइंग अप कहीं पे भी मैं जाती थी तो अगर कुछ भी गलत होता था तो मेरी नजर हमेशा उसी तरफ जाता था. एंड सो विद दैट टाइप ऑफ अ बैकग्राउंड आई थिंक एक क्लिनिकल सेटिंग में जब आप काम करते हो एक हॉस्पिटल में आप बहुत सी चीजें ऐसी देखते हो जो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, इसको छोड़ दो, आपको क्या लेना देना है इसके साथ. तो ये डायलॉग बहुत चलता था हमारे क्लिनिकल राउंड्स में जहाँ पे विमेन लाइक मैटरनिटी वार्ड्स में जब जहाँ पे हम जाते थे थेरेपी के लिए वहां पे होता था. हमारे पास एक न्यूरो का पूरा सेरेब्रल पैल्सी के जो बच्चे होते थे उनका पूरा एक डिवीजन रहता था जहाँ पे न्यूरो पीटी होता था. और वहां पे मैं बहुत सा सोशल जस्टिस रिलेटेड इरेगुलरिटीज देखती थी. आई थिंक दैट वाज वेयर द सीड वाज सोड इनटू माय हेड. But this was what? This was in 2009. So yeah, but I think the seeds of this were sowed into my brain during that time. And I know the name of the child. I don't know where he is now. Vinay. It was because of Vinay and his mother. I think I am where I am today, doing what I'm doing. Uh, he was one of our cerebral palsy patients, like how they like to call it in the clinics. He was the patient. He used to come for therapy, for regular maintenance therapy to our clinic, hospital clinic. I think something that I saw between Vinay and his mother is what brought that thought about disability rights for me. Okay, so we should be thankful to Vinay. And wherever Yeah. he is today, he must be listening to us, and really, it's great. Yeah. Padmini, let us start with the present. कि इस बार जो ओलंपिक्स में 29 मेडल्स आए हैं, Paralympics, yeah. या पैरालंपिक्स में, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक अ थिंग ऑफ सेलिब्रेशन।
कि इससे यस। पहले 2012 में वी हैड ओनली वन मेडल, एंड धीरे हम्म। धीरे 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 अब हम 29 मेडल्स तक पहुंच गए, बट स्टिल वी आर वेरी फार अवे इफ वी यस। कंपेयर विद अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऑलरेडी सेक्टर में एक ऐसा मेरे अराउंड एक रेपुटेशन है कि मैडम हमेशा नेगेटिव बोलती है। ये होता है, बहुत बोलते हैं लोग, तो आप मैं। नेगेटिव नहीं, आप सच बोलती हैं। हाँ, तो फर्स्ट आई वुड डेफिनेटली कंग्रेचुलेट द विनर्स, राइट? वी हैव 29 मेडल्स इन पैरालंपिक्स। ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसका बहुत हमको कंग्रेचुलेट करना चाहिए इस बात पे। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, लाइक एनी अदर इमोशन, आर ऑल्सो, यू नो, it's a very transient thing. You have to next think about what is next. But before I even go into what is next or what I think about it, ये जो मेडल्स का जो ये एक्साइटमेंट है, इसके अराउंड जो नरेटिव एंड एजेंडा सेटिंग होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको बात करना चाहिए। जब लोग बोलते हैं कि हमारे इतने सारे मेडल्स हैं, क्या कभी भी किसी ने सोचा है कि ये जो लोग इंटरनेशनल स्तर पे जाते हैं, क्या ये लोग कौन से पैथवे से जा रहे हैं? इनका क्या जरिया क्या है? लाइक से फ्रॉम somebody गोइंग फ्रॉम खम्मम डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, or somewhere in Andhra, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, पीपल गोइंग फ्रॉम देयर ऑल द वे टू अ पैरालंपिक पोडियम का एक पाथवे होता है जो हमारे देश में बना ही नहीं है, जिसको लोग बनाना ही नहीं चाहते हैं। जो ये लोग, आप अगर एक, इसीलिए मैं बोलती बोलती हूँ कि रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी राइट्स में। जो स्पोर्ट्स का जो इंटरसेक्शन होता है, उसमें बहुत सा ज्यादा हमको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैप में इफ यू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट द पीपल वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, there is a pattern, and you Yes. can match those patterns to the lobbies that are feeding the disciplines. And another thing I wanted to talk to people about is ये जो पैरालंपिक क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, it is a concept that is introduced and followed diligently to keep the competition fair. Okay. इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, कंपटीशन फेयर रखने के लिए रखा गया है ये सिस्टम को। बट इसका इतना जुगाड़ बेस्ड बैकवर्किंग होता है हमारे कंट्री में मेडल्स के लिए। You will Okay. be fascinated by how much it is unfair to the other competitors in Paralympics. Like, for example, the category in which Mariappan and the other athlete Nishant, if I forgot his name, they compete. You know, they took the silver. They took the silver and the other medals, bronze medals. It's a very specific class in which we excel. Mm-hmm. सो अक्रॉस द बोर्ड हमारे हाई जंपिंग या लॉन्ग जंपिंग का डिसिप्लिन इंप्रूव नहीं हुआ है इंडिया में। एक Okay. पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मरियप्पन की डिसेबिलिटी का, जिसको वो एडवांटेज बनाते हैं। उनका जो स्टंप होता है, जो डिफॉर्म्ड स्टंप है उनके, Mm-hmm. उनके वो स्टंप की वजह से उनका बहुत सा तकलीफ है जिंदगी में, अबाउट द मोबिलिटी, द पेन ही एक्सपीरियंसेस और द immobility he experiences because of the deformity. But that deformity has been repeatedly told to him is his biggest ticket for repeated medals, because the day he gets an amputation to actually improve the quality of his life so that it doesn't impact his knees and hips and spine eventually, he cannot win the medal that he is winning. Oh, So there are a lot of nuances related to disability classification and medals that common people are not aware of. They're oh. they're just excited, and I think it's something that a lot of disabled citizens have faced always. जब disabled इंसान कुछ करता है तो people are inspired. I think that inspiration lens is engulfing this movement, Yeah. but it's by and large for a lot of us who work at the grassroots level, we are not excited about the 29 medals because we know exactly how those 29 medals have been won. Not diminishing the individual feat, the way in which they have arrived at winning those medals is just unquestionably not fair, because there was no real competition inside the country with which these people entered that pathways. Yeah. Yeah. So for everybody else in Americas and other places in China and Japan or wherever, where there are clear-cut pathways, UK, the people who are missing out on internal country competition to make it to the podium, it's an unfair people they're competing against. So that's my honest take, which is also a fact. This is verifiable. If people go and like actually research this, this Yeah. is the truth that will come out. Yeah, I know you have been a firebrand advocate. शुरू से ही पता है कि पद्मनी जो बोलेगी सीधा बोलेगी और सच No, बोल। it's unpopular. It's an unpopular opinion. It's an opinion that probably even government officials all the way up to शास्त्री भवन have मैं शास्त्री भवन जा चुकी हूँ, मैं बात कर चुकी हूँ लोगों से। मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को पता है कि ये गलत जरिया है,
ओके। लेकिन लोगों को वो मेडल्स चाहिए, क्योंकि हम्म। लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहे हैं, इसकी वजह से हमारी कंट्री में अवेयरनेस बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइप का अवेयरनेस बढ़ रहा है, द या टाइप ऑफ अवेयरनेस दैट द federations want to bring the flow of money and power. It is not something that is equitable from a disability rights perspective that we are involved in. ये बिल्कुल एक डिफीटिंग कॉन्सेप्ट है. इट इज एक्चुअली इरेजिंग द राइट्स बेस्ड कॉन्वर्सेशंस ओके। with the overwhelming inspirational stuff या। that's getting pumped up now. It's yeah, एंड it's जहां तक मुझे लगता है, मैं जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में देखिए या फेसबुक पे देखिए, दिस इज टेकन एज मोर एज इंस्पिरेशन पॉन, yes, rather than celebrating the sport. वहां yes, because स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं है, बट think वहाँ about it, इंस्पिरेशन Praveen. कौन है? लोग हैरान होके कि कोई मिरेकल, कोई जादू हो रहा है, जैसे हाँ, शीतल देवी का मेडल है। इट्स बीन सीन एज अ मिरेकल। several women and men like Sheetal Devi exist in our country. They have been living forever. They've been artists. They've been phenomenal poets. They've been people who have been armless and living their lives. They were born without arms, have lost their arms. The problem, I think, is it is the culture by large. Sports is a part of the larger culture in the country, like cinema, like art. So I think, like everywhere else, people are inspired because people are constantly looking for that satisfaction of looking somebody doing something instead of me getting up and doing something. Yeah. So I think like many other things that are inspirational for people, like for example, some years ago there was this concept of the logical Indian, or not the logical Indian. There was one man who जिन्होंने पूरा city साफ करना was his thing. Okay. And he was doing it without any identity. He would mask his face so nobody would know who this man is. But he started a whole movement. I think it was based out of Bangalore. So many people made that man viral and his videos viral. But that movement he started has now taken smaller fragments and it's happening in different forms and capacities. But that got erased. It's not happening because for you to do that, you have to get up and do it. Mm. I think that is what is happening with disability sport also. Low people are looking for gratification, and Mm. that inspiration part is also largely coming from the type of attitude that leadership has, whether it is at the federation level, whether it is at the government level, or even whether it is at the family level. एक जो बच्चा disabled है, before this whole inspirational porn was being forced down our throats, people thought disabled children were a burden. Now they're looking at the economics of it. एक पैरालंपिक मेडल जीता है, 1 करोड़, 2 करोड़, जमीन. Like before the child is 24, 25, the child is settling the family. Mm. So now this is going to cause so many other problems that people are still not talking about. Those critical conversations are required. Mm. बात करना चाहिए, अनकंफर्टेबल है लेकिन बात करना चाहिए हाँ, कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो उसकी माइंड में एक गलत फहमी आ जाती है कई बार हाँ, कि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ इंडिया में, हम्म। जो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ भी करके करना है. लाइक भाई, तुमको आपको खेलना है बैडमिंटन, क्या पूरी जिंदगी क्या वो आपको लाइफ स्किल बनाना है? आपको आपको आपके फैमिली के साथ खेल, घर में कोई नहीं खेलता है बैडमिंटन, किसी को खेलने की चाह नहीं है, और आपके घर से बहुत दूर है आपका कोर्ट, आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है. क्या आप ये अपने जिंदगी का एक मकसद में आप बिल्ड कर सकते हो? और क्या इसके लिए आप डेवलप करोगे अपने आसपास रिसोर्सेस? जब ये सवाल किया जाता है तो वो लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैडम से बात करेंगे तो मैडम डिस्करेज ही करेंगे. माई कॉन्सेप्ट इज व्हेन पीपल कम एंड से मैम मुझे ये करना है, मैम वो करना है, क्या ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है? या। कैन दिस क्रिएट द एम्पावरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम अ contributing citizen, disabled or not disabled? हम्म। I think I think the critical pedagogic lens I bring is the hard part for Indians to digest. या। ये वो एक मुश्किल बात है लोगों को प्रोसेस करने के लिए कि मैम हमेशा जो सच सवाल है वो पूछती है मैडम. करना नहीं है मैम, हमको खुशी खुशी बातें करनी है. ये क्या आप ऐसे धड़ाक से आपने ये सवाल कर दिया, हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. मैं कहती हूँ सोचना पड़ेगा आपको. आपकी भी शादी हुई है, आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप आपके बच्चों को भी सिखाना चाहते हो टेनिस? The moment you ask them that question, because we promote wheelchair tennis, me and Sunil Jain, हम्म। the moment you say somebody is disabled who wants to come and get into wheelchair tennis, I ask them a little bit of the family support is also essential. You have two young children
and I'm asking, can you also join them in the tennis club? Because it becomes a thing. Then they're like, नहीं नहीं मैडम ये घर में किसी को. So that becomes the biggest barrier for them to continue participating. That people are not understanding. Yeah. And इसमें जो लोग समझते हैं कि ये जो pathway है, ये जो इंसान के जरिए ये जो लॉबी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, लोग सोचते हैं बाकी देश गए बाढ़ में, मुझे इस पे जाना है. That's how we won the 29 medals. In Mhm. exception to a handful of people, not even a handful, a couple of them in that team, you take interviews of every individual, the way they talk, you will understand what is happening in their heads. And these are the first people who will not stand and picket the fences when you have to actually advocate for rights. Yeah. They'll be the ones who are taking the backdoor entry for deal making. Yeah. So you have been promoting wheelchair tennis, as you have said. Mhm. So why wheelchair tennis? Why not other sports? Wheelchair tennis is not my dream. It is Sunil's dream. Sunil Jain. He's the founder of Asta, a non-profit that's based out of Bangalore. I happened to meet Sunil by chance on Facebook. I'm telling you, while people criticize Facebook a lot, the only reason I have been able to do what I have been able to do in India is because of Facebook. All the people in the disability rights community I met through Facebook. Mhm. And I just happened to meet Sunil. And then for some reason, I think Sunil and me, we are at a we're at a soul level. I think we are very good, well connected friends. We understand each other without having to talk with each other a lot, and that's an excellent camaraderie we have. He helps me um, situate myself within the context of disability because technically I don't have a disability, and that has been a biggest point of resistance for me to enter the sector. um, Sunil is one of the few disabled friends from India with whom I could say, Sunil, somebody just said I don't have a disability, I can't talk about it. And he's like, who is that person? Let me pick up the phone. Let me ask them some genuine questions. Because I think the biggest challenge in India is people saying people without disabilities should not be in this field. Yeah. Yeah. So coming back to why wheelchair tennis, one is I think I have always loved tennis because I was a huge growing up. I had read the book Open when I was like super young, going to libraries, and I'm a huge fan of Andre Agassi. And then when he married Steffi Graf, it became a whole thing for me. So I love them as tennis players. I think tennis is an elegant game. It's a powerful game. It's an intelligent game, I believe, in all the racket sports. I feel badminton is nice, it's fun, but it's not as I feel it's not a smart game. It's a I have a different type of feeling towards badminton and tennis. Tennis is elegant, it's expensive. So if you can actually break the barriers to get access to an expensive sport consistently for persons with disabilities, you're addressing so many aspects of their life. That's why I think when Sunil started chasing their dream and when I joined forces with him, it made so much sense for me to stick with wheelchair tennis than anything else. Because yeah, to develop that ecosystem for actually to sustain it, you have to lift up so many standards for persons with disabilities. And I'm just proud. Whatever drop I'm adding to his efforts, I enjoy it. लेकिन पद्मिनी, व्हाट आई हैव हर्ड इज जो टेनिस का रैकेट होता है, इट इज Mm. वेरी हैवी. So suppose a person is a wheelchair user, doesn't have much strength in the arms or back is not stable. तो क्या वो खेल पाते हैं टेनिस? I think that is where I'll have to tell you the concept of adapted physical activity. Okay. My profession, my field that I had my higher education in. APA एक ऐसा साइंस है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो अक्रॉस द लाइफ स्पैन प्रोवाइड कर सकता है एक्टिविटीज इंसान को फ्रॉम न्यूबॉर्न एज टू अ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन. We are Okay. covering a spectrum of individuals, not just persons with disabilities. Say if I'm going to be pregnant tomorrow, if I am a pregnant woman, there are concepts in APA that I can efficiently apply to myself so that movement is not leaving my life, so that movement can be effectively. So disability is only one small aspect of it. And in APA, when you are designing an activity for a person to be trained in that activity, we are talking about people who have C4 level, C3 level injuries.
We have people who are in electric wheelchairs who need a lot of supports to be able to be stable. We have activities. The concept is to get a person to move. And if that requires adaptive equipment, if it requires adapted sports, that's how we'll do it. Say, for example, when you asked me about the tennis racket, there are different types of tennis rackets based upon how much you can spend and what is your level. But you don't have to use a tennis racket to teach a child, say, who is in a wheelchair, electric wheelchair, and does not have a lot of hand function. You can create adaptive equipment like paddles that are made up of styrofoam. There's a lot of, when you actually see the teachers from this profession outside India, they are innovating a lot. And in our country, ये सब स्पेशल एजुकेशन टीचर्स करते हैं, बहुत से स्पेशल स्कूल्स में ये बहुत होता भी है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं कि जुगाड़, हाँ जुगाड़ी है, एक तरफ से जुगाड़ी है जो एपीए का हमारा जो साइंस है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द एपीए इज ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, इसमें एडवोकेसी एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप एपीए का पूरा सारा डेफिनेशन आप गूगल करोगे, अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन, आपका ये जो 4-5 सेंटेंसेस का डेफिनेशन मिलता है, उसमें एडवोकेसी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके। क्योंकि हम मानते हैं कि किसी को भी अगर मूवमेंट परस्यू करना है उनके लिमिटेशंस को कंसिडर करते हुए, सबसे पहले उनको एडवोकेसी की जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। ओके। That is what I identified as a part of my research when I did my PhD. Is people think the barriers are outside? No, sometimes the barriers are inside, starting from your own home. Yeah, and when I was reading about you, आपने ये भी बोला है कि there are healthcare barriers that because of that persons with disabilities cannot enter sporting activities. You had What healthcare, like limitations, like health limitations? yeah, health limitations and even barriers की वो लगातार अपना suppose what I may think कि अगर वो regular अपनी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू नहीं रखते हैं Oh, okay. or So and it is even costly, very expensive for everyone to afford sometimes. तो शायद ये adapted physical activities में वो participate ना कर पाए. Is that possible? मैं एक एक स्टेप पीछे लेके मैं बताऊं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए तो सर्विसेज है ही नहीं है ना। आप एपीए को छोड़ दीजिए, हमारे पास एक जिला लेवल से लेके आप कॉलोनीज के लेवल से ले लीजिए, आप कॉलोनी ले लो, सिटी ले लो, डिस्ट्रिक्ट्स ले लो, Hmm. हाउ many rehabilitation facilities you have per square kilometer for the density, population density? और बिल्कुल. हमारे पास, हमारा तो सेंसस का हमारा सिचुएशन तो हमें पता है कि अपडेट ही नहीं है। आप वो सेंसस का छोड़िए बात, आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी है, हम्म. आईएपी ने इतने सालों में कितना हमको जियोग्राफिक मैपिंग किया है अपने फैसिलिटीज का। हम्म. Is there any portal or any opportunity where you can open like Google Maps and say, select a state and city, and would you get a list of selected approved people who you can go to? हमारे जो इंटर, जब मैं बोलती हूँ कि एपीए, लॉट ऑफ पीपल से फिजियोथेरेपी है आपका बैकग्राउंड, आप कौन से डिसिप्लिन में हो? मैं बोलती हूँ मेरा बैकग्राउंड पीटी में था जब मैं शुरू करी मेरा करियर, बट एपीए इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एंड आई एम ट्राइंग टू raise the awareness. You don't have to study APA. If you're a PT, I still have training to give you so that you can be friendly for disabled people to come to your clinic. I'm just frustrated with medical practitioners when I say healthcare barriers. I'm talking about, I think Dr. Satyendra Singh can probably allude to this. He's written extensively on this. Yeah. The medical professionals who are getting trained, the paramedical professionals, Yeah. इनका करिकुलर डेफिसिट्स ही छोड़िए आप, जो लोग इनको पढ़ा रहे हैं उनके एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं। तो वो क्या सिखाएंगे अनलेस दे ब्रिंग इन पीपल लाइक यू एंड मी? ये फील्ड, ये सेक्टर्स में वो रिफॉर्म लेके आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल. बिल्कुल. So, Padmini, you were US Paralympic classifier training for track and field events, classified Yes, training. So, what is yes. that? I was curious to know. It's actually interesting you asked me that. As a foreigner, I don't think I was supposed to get that training. अभी मैं जब, when I look back and see how I did it, when I was in my graduate school, I was not getting recommended. कोई recommend ही नहीं कर रहा था मुझे. We had lobby, you know, like PCI, यहाँ पे भी lobbies है, और मैं किसी के lobby में भी fit नहीं होती थी. I'm the Mhm. first Indian.
So nobody knows how to deal with an Indian who wants to pursue these pathways. So what I started doing would be like the same advocacy style: reach out, email people, communicate, connect. So when I ended up in that class where classifiers get trained, these are trained office officials of the Paralympic movement. In the countries, they are para sports personnel, but at the Paralympic level, they are Paralympic classifiers. But you start off at your most basic level, at the state level, और आपको जो नेशनल गवर्निंग बॉडी होता है पैरालंपिक्स का, वो लोग ट्रेन करते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और इनका एवरी ईयर एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन कॉन्सेप्ट होता है, और इनको साल में एक दो इवेंट्स पे जाके उनका टाइम वॉलंटियर करना चाहिए अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए। ओके। These are the personnel that actually give you the sports class. ये जो आप देखते हो F64, F41, या। these classes that are given, ये क्लासिफायर देता है। जो मेडिकल एक क्लासिफायर होता है, जो टेक्निकल होता है। मैं टेक्निकल क्लासिफायर हूँ बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन अडेप्टेड स्पोर्ट्स। हम्म। Person who has a background in physical therapy, medicine, who can practice in this country, in the US, they get classified, they get trained into the medical classification. I do the technical classification. And Hamesha classifier ka team, like Judwa, they are like a pair. A medical and a technical both make up a classification team. And ओके। that is something that we don't have in India. We, again, एक जुगाड़ तरीके से किया गया था, लेकिन we don't have anybody who has progressed to the point of being a international classifier. ओके। जो है नेशनल लेवल पे है, वो लोग वो हम्म। हैंडबुक यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। बट फॉर इंडियंस टू एक्चुअली compete at the Paralympic level, हम्म। they have to get classified outside India. इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाके इनको क्लासिफिकेशन का कार्ड लेके आना पड़ता है। दैट हम्म। इज वेयर द बैरियर इज विद द फेडरेशंस। द पीसीआई बिकम्स द गेटकीपर फॉर द डिसेबल्ड बॉडीज टू गेट टू दैट क्लासिफिकेशन कार्ड। जब जब तक आपको वो ऑफिशियल कार्ड नहीं मिल जाता है, बिकॉज ऑफ विच ऑल दिस पॉलिटिक्स हैपन, कुछ भी करके 12,000 दे दो, 10,000 दे दो, आपको एंट्री मिल जाएगी इवेंट में, इसलिए होता है ये करप्शन। दैट इज वाई या। if India has world class experts who will qualify to become medical and technical classifiers. All that is required for the Modi government to do is to sponsor a team of 10 best medical and 10 best technical and put them in Sai Gandhinagar or Sai or NIS Patiala or Sai Bangalore and make them a permanent panel and say any disabled person can use the Indian Railways, get here and classified. They can do that. That is the type of work the IPC expects, but we don't do that in our country. Is why this whole federation politics happens. या। एंड मैं ये भी सोच रही थी कि शायद जो ओलंपिक्स के लिए बजट रखा गया है उसकी प्रिपरेशन और पैरालंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए बजट है, उसमें भी ह्यूज डिफरेंस है। It's again the attitudinal barriers, Abba. When you actually, I have had a privilege and the misfortune, I would say privilege and misfortune of speaking with government officials in the sports ministry and stuff. ये इनका जो सोच होता है, it's a very it's a very colonial type of सोच आज भी। हम्म। इनको पीएमओ से इंस्ट्रक्शंस है कि आप encourage करिए डिसेबल्ड लोगों को and all that. So सब जुगाड़ हो रहा है। They are not bringing in the people who can actually create a sustainable ecosystem. बोलते हैं भाई वो अनाउंसमेंट हो गया है, पैरालंपिक्स का क्या चल रहा है, चलो निकालो जहां से जुगाड़ निकालना है, बजट। एंड वेल, देयर इज अ क्लेम that they have put in an efficient system in place. Sai teams has improved. Internally they have a team for Paralympic selection. But whatever pathways are currently existing, they are not sustainable. हम्म। जुगाड़ के तरह ही चल रहा है, सस्टेनेबल नहीं है, एंड दे नॉट रेप्लिकेबल ऑल्सो। आप हमारे पास एक ऐसा नेशनल लेवल पे सस्टेन्ड मॉडल नहीं है जो हर स्टेट कॉपी कर सकता है। हम्म। So I think I put the onus on the central government and say really need to step it up because there are talented people who are not making it to the podium. या। I'd say we can easily triple the numbers, but we need more sustainable pathways inside the country. या। सो एनी अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आप अभी यू आर प्लानिंग टू डू, या कुछ Uh, ऐसा नया आप करने वाली हैं? During COVID, I learned something about um, how people want to engage with disability sport. जब जब तक चीजें रिमोट है, जब तक उनको घर से निकालना जरूरी नहीं होता है,
they were willing to engage in the disability rights conversations. I'm talking about the non-disabled people, Yeah. not the disabled, because disabled people are looking for opportunities to come out. And my goal and my immediate and my long-term mission is to not work with disabled people. I don't want to work with disabled people. I want to work with non-disabled people and train and educate them, because the more and more non-disabled people come into the sector, it's like clash of titans. The best of the disabled people are clashing with the best of the non-disabled people, and I think that clash of titans is what has improved a lot of sectors in India. Engineering, medicine, job, two different types of mindset people come and clash, and that's when the best things are created. So my mission is to increase the number of non-disabled people who will take up the disability related professions. It's you have to bust the myths. You have to remove their attitudinal issues and questions. I want to be that bridge maker. Just want to take my materials, build bridges, build bridges. If that bridge has to be between Abha and Padmini, I'll do it. I'm not crazy saying I want to do something huge, Yeah. international, big. Every small connection I make, and I over the years I've connected hundreds of people to each other. I think that's my mission. I was called for that. That's my calling, and I'm just falling in line with it. And I feel जब तक दो वक्त का रोटी है, छत है, सोने के लिए एक जगह है, I'm not ambitious about anything else. And you will So I continue enjoyed with it. your advocacy. Wonderful. That is commendable, Padmani. And मैं No, सोचती हूँ कई it's also बार। a consequence of privilege. हम्म। I have so far I have the privilege of not being disabled. While this will be taken offensively by my disabled friends, at this up to this point I'm not disabled, and I have the privilege of being raised in a Brahmin family. I got the best education. I had caste privilege growing up. I हम्म। had education privilege growing up. And when you grow up in a family where social justice का language चलते रहता है, सोच ऐसा ही develop होता है. एक You'll not be crazy about the materialistic things that other people run behind. Somewhere you land here. By the time you hit your 30s, you're like, I think I know what I want to do for the rest of my life. So all the best. So Thank you. thank you for being with us. Thank you, Padmani. Thank you And so much, we will Anna. be in touch. Thank you. Yeah. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye.